Hello everyone, so welcome back to Kalam IAS Academy, and we already run this current aids program. Under that, very important topics we have already covered. Some of the most important topics we are going to cover here. This is the most important topic. Why? Because it was in the news, right? That you will come to know. For example, the impeachment of the Vice President of India. The impeachment of the Vice President of India, it was in the news because this news was there that opposition is set to submit the notice for the resolution to impeach Jagdeep Dhankar, who is the current Vice President of India. और ये नोटिस सबमिट भी किया गया, एक्चुअली ये नोटिस सबमिट भी किया गया, लेकिन कोई भी इम्पीचमेंट प्रोसेस हुआ नहीं. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज जो you know that the Vice President of India is the chairman of the Rajya Sabha, right? And अगर chairman of the Rajya Sabha को हटाने की बात हो तो क्या chairman of the Rajya Sabha के पास नोटिस जाएगा? नहीं जाएगा, है ना? तो वो जाएगा किसके पास? तो वाइस चेयरमैन के पास. तो वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा जो करंट में है उनके पास ये नोटिस गया फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हैं उन्होंने इस नोटिस को रिजेक्ट कर दिया. द पर्सन ही हैज रिजेक्टेड दिस नोटिस सेइंग कि ये बस इट वाज ए फ्लॉड एंड इट इज मेंट टू मार द रेपुटेशन. मीन्स दिस अटेम्प्ट इज ओनली टू मार द रेपुटेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये तो चला तो नहीं प्रोसेस, बट नाउ दिस हैज केम इन द न्यूज. सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू in UPSC prelims 2025, right? तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा तो देख ही लेते हैं. The Vice President of India, you know that the President of India is the first citizen of India and he is the head of the state, right? At the topmost position President of India is there. At the second most important position, इस second जो line of incidence है उसमें Vice President of India is there. This post of the Vice President of India, so we have taken inspiration from the United States of America. जैसे United States of America में भी एक Vice President का post होता है. Similarly, we are also having the Vice President of India. But obviously there are lots of differences between the USA and the Indian setup of Vice Presidentship, right? So that is there. So any one person will be becoming the Vice President of India. He will be there for the 5 years. सो करेंटली अभी तक ये जो वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीप धनखड़ जो हैं, सो ही इज़ द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ही इज़ द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड स्टार्टिंग में ये ट्रेंड था कि द पर्सन हु यूज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट अर्लियर ही यूज टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो. सो आउट ऑफ दिस 14 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 6 ऑफ देम ऑल्सो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो आज आप जाएंगे और ये खोजेंगे कि कौन वो 6 पर्सन हैं जो वाइस प्रेसिडेंट बने, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के बाद वो प्रेसिडेंट भी बने, राइट? एंड देयर इज ओनली वन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अपने टेन्योर के टाइम पर उनकी डेथ हुई थी. दिस ऑल्सो यू विल बी सर्चिंग. प्लीज सर्च इट एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. देन कमिंग टू द इलेक्शन, हाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड. सो इफ यू सी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सेटअप, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आपको सेटअप पता होगा कि कैसे उनका इलेक्शन होता है. उसमें जो इलेक्टरल कलीग होते हैं, सो देयर इज इलेक्टरल कलीग. सो इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द इलेक्टरल कलीग इज द इलेक्टेड member of parliament, that is the Lok Sabha, elected member of the Rajya Sabha, and also the elected member of the state legislative assemblies, and also the elected members of those union territories which has the legislative assemblies, right? No nominated members are there. But in case of vice president, the electoral colleague is different, because in the electoral colleague of the vice president, so both nominated as well as the elected, both nominated plus elected members, they will be voting for the election, right, of the Vice President of India. And you know that the
election will be based on the what? It will be based on the proportional representation. It will be based on the proportional representation by means of single transferable vote, by means of single transferable vote, and in terms of what? Secret ballot, in terms of secret ballot. So through this methods, Vice President of India will be elected. Once a person will be elected, he will be there for the 5 years, right? Now what are the educational qualification? For example, you are preparing for the UPSC exam. So the educational qualification is 21 years of the age, then you should be graduate, right? So that kind of educational qualification is there. But in case of to become the Vice President of India, there is no such educational qualification. But there are 4 kinds of qualification which the person should have. The qualification should be, the person should be first of all the citizen of India. The person should be citizen of India. Then the person should be minimum of 35 years of the age. 35 years age. Then the third is, that is eligible to become the member of Rajya Sabha, because obviously he will be the chairman of the Rajya Sabha. And one very important point is that though the Vice President of India is the chairman of the Rajya Sabha, he is not the member of the Rajya Sabha, right? He should only be the eligible to become the member of the Rajya Sabha. That's it. And the fourth, that is the office of profit should not be holding. No office of profit he should be holding. है ना? Office of profit, you know that there are several kinds of offices in our country at the central level as well at the state level, जहाँ से कुछ सैलरी मिलता है या सैलरी नहीं भी मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन ये था कि कुछ अदर प्यूनिटिव और नॉन प्यूनिटिव टाइप्स का किसी भी तरह का बेनिफिट्स अगर मिल रहा है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू डिस्कार्ड दैट. लेकिन एक चीज़ आप याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑल द मिनिस्टर्स एट द सेंट्रल लेवल और द मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल, गवर्नर्स, ये सब पोस्ट जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आता है. इसका मतलब है कि अगर कोई किसी स्टेट का गवर्नर है और अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहे तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है. देयर इज नो प्रॉब्लम इन सच, राइट? सो दीज आर द 4 क्राइटेरिया ऑफ qualification or the eligibility to become the vice president. Once a person will be the vice president of India, he will be there for the 5 years, है ना? He will be there for the 5 years. लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर एक पर्सन 5 साल तक रहे, because the person may because of certain things, for example, there can be death of the person, right? So in that case, new vice president will be coming, right? New vice president will be coming, that will also be coming for the 5 years. So tenure will be of the 5 years. But at any given point of time, the person can give resignation, because India is a free country. Even if he is the vice president, even if he is president, maybe that he is not willing to continue that post, right? So at any given point of time, the person can resign, and the resignation letter should be in the name of President of India, right? Just like the President of India will be resigning by writing letter to the Vice President. तो ये रेजिग्नेशन की तरह हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उनको रिमूव कर दिया जाए. तो इन सब सारे तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वो खाली हो जाएगा, राइट? देखो, अगर टेन्योर खत्म होने के कारण वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हो रहा है, तो टेन्योर खत्म होने से पहले पहले इलेक्शन कंडक्ट करवा लिया जाएगा. बट इफ इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, इन केस ऑफ दिस रिमूवल, you cannot know that on which date this will be happening, right? तो पहले से इस केस में इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता है न्यू वाइस प्रेसिडेंट के लिए. तो as soon as possible द न्यू वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा, और फिर नए जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट करेंगे, राइट? सो दैट विल बी देयर. एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंट के केस में दैट इज फिक्स्ड कि इवन इन केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन एंड इम्पीचमेंट, so in that case also within 6 months of that date ये हो जाना चाहिए, नए प्रेसिडेंट आ जाने चाहिए. बट वाइस प्रेसिडेंट केस के ये क्या है कि वो as soon as possible he should be coming, right?
So this is regarding the tenure and the resignation. Now, जो अभी इशू आया था regarding the removal of the Vice President of India. So how the removal of the Vice President of India can take place? So first of all, as he is presiding over the Rajya Sabha only, so all the removal procedures will be started from the Rajya Sabha only. There will not be the cases where the removal process will start from the Lok Sabha. That will not be the scenario. So in the Rajya Sabha, a notice has to be given. A notice has to be given that resolution to bring the removal of the Vice President of India has to come in the office. So after the 14 days, the resolution will be coming. Resolution will be coming. Where? In the Rajya Sabha. Now this resolution must be passed. This resolution must be passed through effective majority. Through effective majority. That means whatever the total members of the Rajya Sabha at that point of time. See, there are 245 members. 245, that is 233 plus 12. 233 are the elected plus 12 are the nominated. So 245 is there. There may be scenarios that some posts are vacant, some person died during that tenure. So maybe that 200 people are there. Let's say that 200 people are there. So effective majority, you will have the majority of minimum, if there is 200, so 101 vote has to be there, then only through the effective majority it will be considered as passed. So through the effective majority, once this will be passed, then this will go to the Lok Sabha, and in the Lok Sabha, if the removal is only through the simple majority, means only acceptance is required. Simple majority. In the simple majority, you know that what is kind of simple majority is there? Half of the members present and voting. Let's say that 70 members are present. So, and 70 members are present and 70 are voting also. So only 36 members they will be accepting. So that will be the scenario. ठीक है. तो अभी जो केसेस आया था, जो रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो एक्चुअली हुआ क्या कि वो 10 दिसंबर को आया. 10th of December 2024 को ये नोटिस में लाया गया. सो एटलीस्ट 14 डेज होना चाहिए, है ना. 14 डेज होना चाहिए, मीन्स 24 दिसंबर तक तो कम से कम वेट करना ही पड़ता. बट प्रॉब्लम यहाँ था कि 20th दिसंबर को ही, 20th दिसंबर वॉज द लास्ट डे ऑफ विंटर सेशन. 20th दिसंबर 2024 वॉज द लास्ट डे ऑफ द विंटर सेशन. तो इसको कंटिन्यू ही नहीं किया जा सका. एंड देयरफॉर, एंड ये पहले से सबको पता था कि 20th दिसंबर जो है वो लास्ट डे है, राइट. इसीलिए जो वाइस चेयरपर्सन है, राइट, सो ही टोल्ड दैट ये जो गलत मोटिव से लाया गया है, क्योंकि सारे मेंबर्स को पता है कि 20th दिसंबर को तो ये हाउस डिजॉल्व हो जाएगा. दैट मीन्स नॉट डिजॉल्व इज नॉट द राइट वर्ड. सो एडजर्न साइड डाई हो जाएगा एंड उसके बाद फिर प्रोरोग हो जाएगा, राइट. मीन्स दैट विल बी देयर. तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया इन करेंट सिनेरियोज, जो अभी करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में जो अभी इशू आया था, जो हमने अभी देखा था न्यूज़ में. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये 14 डेज नोटिस कंप्लीट ही नहीं हो पाया. 20th दिसंबर को ही सब कुछ खत्म हो गया. नाउ रिगार्डिंग द पावर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, see the most important power the vice president of India will be having, that he will be the chairman of Rajya Sabha, right. And while acting as the chairman of the Rajya Sabha, all the responsibility will be what? He shall be maintaining the decorum of the house, right. He shall be giving the equal opportunities to speak to both the political parties, all the political parties, that is ruling party as well as the opposition parties, right. So all these kinds of responsibility, just like the speaker of the Lok Sabha is having, so that kind of responsibility is there with the vice president while acting as the chairman of the Rajya Sabha. However, there can be certain scenarios in which the vice president can also act as the president. अब हो सकता है कि 5 साल में ऐसा सिनेरियो बने या हो सकता है नहीं भी बने.
तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वाइस प्रेसिडेंट 5 साल तक वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का ही रोल निभाते रह गए, उनको कभी मौका ही नहीं मिला प्रेसिडेंट बनने का, राइट, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। बट अगर मौका मिलता है प्रेसिडेंट बनने का, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड whatever the powers, whatever the emoluments that is there for the President of India, so everything will be enjoyed by the Vice President of India at that point of time. And एक टाइम पर वो एक ही पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं, therefore while acting as the President of India will not be presiding over the Rajya Sabha, right? So he will not be acting as the chairman of the Rajya Sabha while he is acting as the President of India, right? So he will not be getting the double salary, that is the as the chairman of the Rajya Sabha plus as the President of India. He will only be getting the salary of the President of India while acting as the President of India, right? तो ये तो इनके दो तरह के रोल हो गए. Now regarding the salary emoluments and all these kinds of things, so whatever will be decided by the Parliament, that will be the salary and emoluments given by to the Vice President of India, right? अभी करेंटली जो सैलरी है वो 4 लाख है, 4 लाख पर मंथ. पार्लियामेंट इफ दे विश, हो सकता है कि अभी जो 8 पे कमीशन आया है उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस का भी सैलरी चेंज कर दिया जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का भी सैलरी चेंज हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है. तो ये टाइम टू टाइम इनका सैलरी चेंज होता रहता है, राइट? सो दैट इज देयर, एंड ए पर्सन कैन बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट एनी गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है? तो रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, कितना भी बार रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेयर ऑल्सो द पर्सन कैन बी रीअपॉइंटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, राइट? तो ये सब सारा कुछ आप समझ सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. अब आपका जो असाइनमेंट है, सो दैट इज कि एक तो आप ये देखेंगे कि हु हैज़ बीन द सर्विंग एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट डे ड्यूरेशन, देन कितने ऐसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, उनका क्या नाम है, कौन ऐसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जिनका टेन्योर के टाइम पर डेथ हो गया था. तो ये सब सारा कुछ नाउ यू विल बी रिसर्चिंग ऑन योर साइड, एंड प्लीज ट्राई टू कमेंट ऑल्सो, राइट? तो इस सेशन में तो यही है. ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर करेंट एज प्रोग्राम, बिकॉज दिस प्रोग्राम हैज ए स्पेशल फोकस, because whatever the news are there, not necessarily that issue will be coming in your exam, लेकिन उस issue से related static portion जरूर आ सकता है. Therefore this program becomes very helpful, and this program has the capacity to touch upon 40 to 45 questions, because directly or indirectly 40 to 45 questions is been touched upon through the current affairs, right? जैसे इस बार वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. सो रिगार्डिंग टॉकिंग अबाउट दिस प्रोग्राम, सो दिस हैज़ ऑल द मॉड्यूल्स ready, and for that the important materials like the newspaper, Indian Express Yojana, PIB. So these kinds of things have been taken into consideration to make this. This will have in total there will be 23 tests, office there will be 2 full length tests, and there will be 13 workbooks. Based on that there will be 13 workshop as well. Everything will be covered in this, like the case snippet sessions are there. Means throughout the year, even if you have not covered the current affairs, so you not to worry, because through the case snippet session we try to cover for the entire years of current affairs. For example, the polity and governance, economy, geography, environment, science, technology. So there are 8 modules, and that we will be covering under this. So I hope that you should be checking out this program as well if you feel that you need this, right? So that is all from my side in this session. We will be meeting frequently with the current age series, only with the most important topics, but again this videos is not exhaustive in nature, means जो YouTube पे आएगा वो, this program is very much exhaustive in nature. You can very much rely for the current affairs on this program, because इसमें बहुत सारे topics, more than like 1200 topics we have already covered, right? So thank you very much. We will be meeting with the next topics.